Hello students, in the last class we have discussed some questions related to AGB and some spatial sequence. Now today we will discuss some miscellaneous questions related to these concepts. So write down the first question. Find the sum of the series 15 square plus 16 square up to 30 square. We have to find the sum. So, in this question, the terms are 15 square, 16 square up to 30 squares. हम लोग जो जानते हैं sum of square of natural numbers 1 square plus 2 square plus 3 square up to n square. But in this case, the sequence is starting from 15. So how we find the sum? We can write this sequence in this way: 1 square plus 2 square plus 3 square up to 30 square minus we can represent the same sequence in this manner. Now we know the sum of this 1 by 6 30 into 31 into 61 minus 1 by 6 14 into 15 into 20. So after simplification, 5 jar, 2 7 3 jar. It is 5 into 31 into 61 minus 7 into 5 into 20. So in this way we can find the sum. इसमें और भी तरह से हो सकता है. Suppose the question will be 15 cube plus 16 cube plus 17 cube up to 30 cube. So procedure will be same as this question. Now write down the second question. Find the sum of the series. Find the sum of the series n into 1, n minus 1 into 2, n minus 3 into, n minus 2 into 3, dash dash dash, one into n. Now if we notice this sequence and if we notice for the first term n minus 1, n minus 2, this is an AP and it is a decreasing AP. And if we consider this 1, 2, 3, n, this is the AP with same common ratio and increasing in order. यहाँ पर जो है n minus 1, n minus 2 में जो common difference है वो क्या है? -1 का है. और यहाँ 1, 2, 3 इसमें जो common difference है वो +1 का है. अब हम इसको सबसे पहले first of all we will find the general term. What is the general term of this? The general term of this sequence is r is equal to 1 to n r into n minus r plus 1. This is the general term of this sequence. R is equal to 1 to n, r into n minus r plus 1. So, sorry. TR is equal to r into n minus r plus 1. So what is Sn? Sn is equal to summation r is equal to 1 to n dr, and it is summation r is equal to 1 to n r into n plus 1 minus r. In order to find the sum, we can write in this way. So we can split the summation r is equal to 1 n plus 1 into r minus r is equal to 1 to n r square.
It can be written as n plus 1 summation r is equal to 1 to n r minus summation r equal to 1 to n r. N plus 1 into 1 by 6, 1 by 6 n into n plus 1 upon 2. And here it will be 1 by 6 n into n plus 1 into 2n plus 1. इस तरह के सवाल का हम सब कुछ इस प्रकार निकाल लेते हैं. Write down the next question. If 1 over 1 square, 1 over 2 square, 1 over 3 square plus less than that infinity is equal to pi square upon 6, then find the value of, of 1 by 1 square, 1 by 3 square, 1 by 5 square, that's it. अब देखिए इस सीक्वेंस में हमें इन नंबर ऑफ टर्म्स का सम दे रखा है और ये हमें निकालना है. यूज इसको करते हैं तो कैसे निकाल पाएंगे हम? तो मैं इसी सीक्वेंस को पिक करता हूं. 1 by 1 square plus 1 by 2 square plus 1 by 3 square plus 1 by 4 square plus 1 by 5 square plus 1 by 6 square. This is equal to pi square by 6. और इसकी जो हमें निकालना है सीक्वेंस का नाम मैंने S रख दिया. अब इसी सीक्वेंस में हम 1 by 1 square, 1 by 3 square, 1 by 5 square means odd position terms, उसको हम सेपरेट कर देते हैं. प्लस 1 by 2 square plus 1 by 4 square plus 1 by 6 square infinity. That is equal to pi square by 6. Now, this expression can be written as S. And the remaining part we will send it to right hand side. Minus 1 by 2 square infinity. S is equal to pi square by 6 minus, we can take 1 by 4 common and the remaining 2 square, 3 square till infinity. So after simplification, we can write pi square by 6 minus 1 by 4 times pi square by 6. So pi square by 6 common, 1 minus 1 by 4 and it will be equal to pi square by 6 into 3 by 4. So it will be equal to pi square by 8. So in this way we can find the sum of these types of sequence. ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Find the sum up to n terms find a sum up to n terms of the sequence. Find the term up to n terms of the sequence 1 over 1 plus 1 square plus 1 to the power 4, 1 2 square plus 2 to the power 4, 3 over
1 plus 3 square plus 3 to the power 4 up to n terms. अब इसका सम निकालने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द rth टर्म tr. So what is tr? tr will be r upon 1 plus r square plus r to the power 4. एक बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी हमें इस तरह के एक्सप्रेशन मिलते हैं हमें इस एक्सप्रेशन को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना होता है, या ये कह सकते हैं हमें पार्शियल फ्रैक्शन करना होता है. तो इसको हम देखिए कैसे मैनेज करेंगे. फिलहाल मैं इसको पहले फैक्टराइज कर रहा हूं, तो उसी हिसाब से हम न्यूमरेटर को एडजस्ट करेंगे. r to the power 4 plus 2r square plus 1 minus r square. r is equal to r upon r square plus 1 whole power 4 minus r square. So what is tr? tr is equal to r over r square plus 1 plus r and r square plus 1 minus r. अब हमें इसको मैनेज करना है. देखिए किस तरह से करेंगे. अगर मैं इन दोनों टर्म्स को ऐड कर देता हूं, डिनोमिनेटर को क्या कर देते हैं हम ऐड, तो ऐड करने पर जो ये बनेगा इट विल बी 2 times r square plus 1. अगर हम डिनोमिनेटर को ऐड कर देते हैं इट विल बी 2 times r square plus 1 एंड इफ वी सबट्रैक्ट इट तो यहां पर क्या बनेगा 2r. तो यस इसी से हम मैनेज कर जाएंगे. 1/2 2r over r square plus 1 plus r and r square plus 1 minus r. And finally 1/2 it is r square plus 1 plus r minus r square plus 1 minus r. r square plus 1 plus r into r square plus 1 minus r. Next time we can write as r square plus 1 minus r minus r square plus 1 plus r. तो इस क्वेश्चन में सबसे इसमें कुछ पार्ट बहुत अहम है. नंबर 1 कि हाउ वी फैक्टराइज दिस एक्सप्रेशन. हम इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कैसे करते हैं. तो तरीका था r स्क्वायर को क्या करते हैं ऐड एंड सब्ट्रैक्ट. दूसरा फैक्टराइज करने के बाद हम इसको कैसे 2 टर्म्स में ब्रेक कर सकते हैं. तो उसके लिए हमने देखा न्यूमरेटर में r था, डिनोमिनेटर में r स्क्वायर प्लस 1 प्लस r स्क्वायर प्लस 1 माइनस r. तो हमने कहा कि अगर ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाए तो यहां पर 2r बन जाएगा. अब ये कैंसिल कैसे होगी अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं. तो उसी चीज को हमने मैनेज किया और ये आंसर आ गया. हालांकि इसको फैक्टराइज करने का एक और तरीका भी होता है जिसको हम पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं, बट उसकी यहां फिलहाल रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हम इस तरह के एक्सप्रेशन को मैनेज कर सकते हैं. बस ध्यान ये रखना होता है कि जो ये 2 टर्म्स है इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिएगा. कहीं न्यूमरेटर तो नहीं बन रहा है या न्यूमरेटर मैनेज तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर ऐसा हो सकता है तो फिर हम इसी से ही अपना काम चलाएंगे. सो दिस इज द rth टर्म. नाउ वी हैव टू फाइंड द सम. सो सम हम कैसे निकालेंगे देखते हैं. Sn is equal to t1 plus t2 plus t3 up to tn. So what is t1? 1/2 देखिए सब में कॉमन होगा तो मैं पहले लिख दे रहा हूं. t1 is 1 minus 1/3. t2 if we substitute 2 then it will be 1/3 minus 1/7. अगर हम इसके बाद t3 रखते हैं इट विल बी 1/7 minus 1/13 and dash last term will be 1 upon n square minus n plus 1 minus n square plus n plus 1. अब आप देख रहे हैं सारे के सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे कैंसिल. एंड फाइनली इट विल बी 1/2 1 minus 1 upon n square plus n plus 1. After taking LCM 1/2 n square plus n over n square plus n plus 1. In this way we can find the sum of this sequence. ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है. आप लोग इसके प्रोसीजर को अच्छे से ध्यान रखें ताकि इसके जैसा अगर सवाल मिल जाए तो हमें प्रोसीजर पता हो किस तरह से इसको मैनेज किया जा सकता है.
Now see the next question. अब इसी में एक मेथड होता है VN मेथड. सो राइट डाउन VN मेथड सम निकालने के लिए. VN मेथड देखिए क्या होता है. लेट A1 A2 A3 AN are in A1 A2 A3 up to AN are in A and find the sum. Find the sum of the sequence. Find the sum of the sequence. And the sequence is A1, A2, A3 up to AR plus A2, A3, A4, AR plus 1, A3, A4 up to AR plus 2, AN plus 1, AN plus R minus. How do we find the sum of these types of sequences? So, in order to determine the sum, first of all we will determine Tn. What is Tn? Tn is AN plus 1, AN plus 2 up to AN plus R. This is Tn. So, what is Vn? Vn will be AN plus 1, AN plus 2, dash, AN plus R. Minus 1 into AN plus R. This is Vn. So, what is Sn? Sn is equal to 1 upon R plus 1 into D. Vn minus V naught. Sn will be 1 over R plus 1 into D, Vn minus V naught, where D is the common difference of this thing. तो क्या है प्रोसीजर? अगर हमें कुछ इस तरह का सीक्वेंस मिलता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिटरमाइन द Tn देन Vn. Vn निकालते समय जो लास्ट टर्म है उसे एक अगला टर्म और देखते हैं. अब इसका यूज देखें आप लोग. सपोज हमें इस सीक्वेंस का सम निकालना है. 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4, n into n plus 1. इसका सम निकालना. 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4, dash up to n into n plus 1. कैसे निकालेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिटरमाइन Tn. Tn is n into n plus 1. What is Vn? Vn will be n into n plus 1 into n plus 2. This is V. Vn is n into n plus 1 into n plus 2. Sn is equal to 1 upon R plus 1 into D, Vn minus. So R plus 1, how many terms? इस एक टर्म में कितने नंबर्स इन्वॉल्व हैं? 2. तो यहां पर R की वैल्यू क्या हुई? 2. जैसे यहां पर जो हमने पढ़ा था इसमें इस एक टर्म में कितने नंबर्स इन्वॉल्व थे? R. दिस इज द वैल्यू ऑफ R. So from here the value of R is 2. Number of numbers in each terms in product represent R. So 2 plus 1. What is D? D is 1. So we 1 to 2. And what is Vn? N into n plus 1 into n plus 2. V naught. To determine V naught, put n equal to 0. So what is the sum? 1 by 3 n into n plus 1 into n plus 2. So this is the procedure to find the sum of n terms. हालांकि इसको हम जनरल मेथड से भी कर सकते हैं, PR निकाल के फिर समीशन लगाते हैं, बट इसमें ये उससे जल्दी हो जाएगा. एक और सवाल देखिए.
Find the sum of the sequence 1 into 3 into 5, 3 into 5 into 7, 5 into 7 into 9 up to n terms. 1 into 3 into 5 plus 3 into 5 into 7 plus 5 into 7 into 9 up to n terms. तो देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ Tn. What is Tn? Tn will be 135 का nth term होगा 2n minus 1, 357 2n plus 1 and 579 it will be 2n plus 3. This is the nth term of this sequence. What is R? Sorry. Then we will calculate Vn. Vn will be 2n minus 1, 2n plus 1, 2n plus 3. What is the common difference of these terms? 2. So next we will take 2n plus 5. Next term जो हम लेंगे वो इसी common difference के हिसाब से हम लेंगे 2n plus 5. What is R? R is equal to 3. And what is the common difference? Common difference is 2. So Sn is equal to 1 over R plus 1 into D Vn minus V. R 3 plus 1 into 2. The Vn will be 2n minus 1, 2n plus 1, 2n plus 3, 2n plus 5 minus V0. V0 will be minus 1, 1, 3, 5. So finally the answer will be 1 by 8, 2n minus 1, 2n plus 1, 2n plus 3, 2n plus 5 plus 15. In this way we can find the sum. So I think सब लोगों को ये मैथड समझ में आ गया होगा. इसके हेल्प से हम काफी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेते हैं. नेक्स्ट देखिए इसी का एप्लीकेशन एक और. So next method, if A1, A2, A3, A4, An minus 1, An are in AP, then A1, A2, A3 up to AR, A2, A3, A4 up to AR plus 1, A3, A4, A5, AR plus 2, 1 upon An, An plus 1, An plus 2, An plus R minus 1. हमें इसका सम कैलकुलेट करना है. सबसे पहले हमें Tn निकालेंगे. Tn plus 1, Tn plus 2, N plus R minus 1. This is Tn. Now what is Vn? Vn is 1 over. हमने जो पिछला वाला था उसमें यहां से एक टर्म आगे कर देता. इस वाले केस में हम ये फर्स्ट टर्म कट कर देंगे. And Vn will be An plus 1, An plus 2, An plus 3 up to An plus R minus 1. पिछले पार्ट में हमने Vn निकालते समय Tn में लास्ट में एक और टर्म इंट्रोड्यूस किया था और यहां पर हम Vn निकालते समय Tn में से जो फर्स्ट पार्ट था उसको हटा दें. सो इन दिस केस द सम Sn 1 अपॉन R माइनस 1. पिछले केस में R प्लस 1 था, यहाँ R माइनस 1. 1 अपॉन R माइनस 1 इंटू D V0 माइनस Vn. 1 अपॉन R minus 1 into D, V0 minus Vn. अब देखिए यहां पर सपोज
क्वेश्चन हमें कुछ इस प्रकार मिलता है 1 over 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4, 1 over n into n plus 1. Find the sum of this series. So first of all we will determine Tn. Tn is 1 over n into n plus 1. Tn is 1 over n into n plus 1. What is Vn? Vn will be 1 over n plus 1. Vn क्या होगा? 1 over n plus 1. R is the number of numbers in product in the denominator, and there are only 2 terms. And what is the common difference? The common difference is 1. Now use the formula Sn. Sn is equal to 1 upon R 2 minus 1 D 1 V naught 1 over 1. Put n equal to 0, then it will give V naught minus 1 over n plus 1. So after simplifying it is n over n plus 1. इस तरह से भी हम Vn मेथड को यूज कर सकते हैं. एक और सवाल देखें इसमें. सपोज हमने क्वेश्चन ये देखा, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, फाइंड द सम of the series, and the series is 1 over 1 into 3 into 5, 3 into 5 into 7, 5 into 7 into 9 up to n terms. 1 over 1 into 3 into 5 plus 1 over 3 into 5 into 7 plus 1 over 5 into 7 into 9 up to n terms. So what is Tn? Tn will be 1 over 2n minus 1, 2n plus 1 and 2n plus 3. Tn is equal to 1 over 2n minus 1 into 2n plus 1 into 2n plus 3. What is Vn? Vn is 2n plus 1 into 2n plus 3. And the R is equal to 3. कितने terms से denominator में? 1, 2, 3. R represents the number of terms in the product in the denominator. R is equal to 3. And what is the common difference? Common difference is 2. So what is Sn? Sn is equal to 1 upon R minus 1 into D V naught minus R 3 minus 1 into 2 V naught 1 over 1 into 3 minus 2n plus 1 into 2n plus 3. So Sn is equal to 1 by 4 1 over 1 into 3 minus 1 over 2n plus 1 into 2n plus 3. इस तरह से हम इसका सम निकाल सकते हैं. So these are the application of Vn method. कई बार इसमें सवाल कुछ इस प्रकार आता है, देखिए. Sometimes the question will be like this: 1 over A1, A2, A3 plus 1 over A2, A3, A4 plus 1 over A3, A4, A5 plus dash 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 1 over An minus 2, An minus 1, A3. Find the sum of this sequence.
ना तो यहां पर क्या गया कितने टर्म्स है क्या है सब हमें लोगों को डिसाइड करना है। सबसे पहले द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस सीक्वेंस, नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीक्वेंस, दैट इज इट इज n-2। नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीक्वेंस विल बी n-2। कैसे? पहले वाला क्या है a1 या a2 ये a3 और लास्ट यहां पर क्या है an-2। सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस सीक्वेंस, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस सीक्वेंस इज n-2। तो अब यहां पर सम निकालेंगे हम क्या लगाएंगे vn-2 लगाएंगे। इन ऑर्डर टू फाइंड द सम वी विल यूज vn-2। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज en-2? en-2 is 1 over an-2 an-1 an. This is Tn-2. And now what is Vn-2? Vn-2 is an-1 an. This is Vn-2. अब Vn-2 यहां पर what is the value of r? R is equal to 3 and D is a2 minus a1। तो ये देखो एक बात ध्यान रखिए, वीएन मेथड तभी वर्क करेगा जब ये टर्म्स किसमें हो ए पी हो। लिख देता हूं मैं a1 a2 a3 an r in a p, d is equal to a2 minus a1। now Sn-2 is equal to 1 upon r minus 1 into d v0 minus Vn minus। Sn-2 is equal to 1 upon r minus 1 into d into V0 minus Vn minus। तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? What is r? R is 3 minus 1, d is a2 minus a1। V0, how we find V0? यहां पर मैं n की वैल्यू क्या रखूं ताकि ये v0 बन जाए, n इक्वल टू 2। इट विल बी 1 अपॉन a1 a2 माइनस vn minus 2 n minus 1 a। and finally Sn minus 2 is equal to 1 upon 2 times a1 a2 minus a1 a2 minus a1 1 over a1 a2 minus 1 over an minus 1 an। तो कई बार हमें क्वेश्चन कुछ इस प्रकार भी मिल सकता है कि हमें सम ऑफ n टर्म्स की जगह सम ऑफ n-2 टर्म्स निकालना हो, तो ध्यान रखें इसे। इसके अलावा जो इसमें और पूछा जा सकता है वो ये है, जैसे suppose there are n numbers a1 a2 a3 a4 up to a। now find the sum of the numbers, find the sum of the product of numbers taken two at a time। find the sum of the product of numbers taken two at a time। sum of the product of number taken two at a time, इसका मतलब क्या हुआ? अब इसको ध्यान से समझे। अगर हमारे पास 3 नंबर हैं a b c, समझे इसको। if we have 3 numbers a b c and what is the sum of the product of number taken two at a time? so sum of the product of numbers taken two at a time is AB plus AC plus BC। यानी A B, A का B के साथ कॉम्बिनेशन, A का B के साथ।
B का C के साथ, और कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता. If we have four number A, B, C, D, then sum of the product of numbers taken two at a time. AB plus AC, AB plus AC plus AD. तो A का B के साथ, A का C के साथ और A का D के साथ, प्लस BC plus BD plus AD. So whenever we find the sum of the product of number taken two at a time, pick the first term and make the combination with other terms such as AB, AC, AD and add them. So these are the possible combination of A with other terms. Now take the B, BC, BD. क्योंकि B हम already use कर चुके हैं. And now take C, it is CD. Sorry, last term is CD. So this is the sum of the product of number taken two at a time. अब इसी तरह से हमारे पास क्या है, n नंबर्स है, A1, A2, A3 up to AN. तो यहां क्या होगा, A1, A2 plus A1, A3, A1, A4, A1, AN. These are the all possible combination of A1 with other terms and their addition. Plus A2, A3, A2, A4, A2, AN plus A3, A4, A3, A5, A3, AN and last AN minus 1 AN. So this is the sum of the product of numbers taken two at a time. कितने टर्म्स होंगे यहाँ पर, अगर ये पूछा जाए कितने टर्म्स होंगे, तो n into n minus 1 by 2. The number of terms are n into n minus 1 upon 2. इसको हम कैसे कह सकते हैं, A1 के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, n minus 1, A2 के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, n minus 1, A3 के भी n minus 1 और AN के भी n minus 1. इन सबको ऐड किया तो n into n minus 1. बट यहां कुछ रिपीटिशन है, और रिपीटिशन क्या है, जब मैंने A1 के कॉम्बिनेशन की बात करी तो उसमें A2 था, और जब मैंने A2 के कॉम्बिनेशन की बात करी तो उसमें A1 था. तो इसका मतलब कुछ कॉम्बिनेशंस यहां पर दो बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हम यहां पर 2 से क्या कर देते हैं, डिवाइड. सो नंबर ऑफ टर्म इन दिस एक्सप्रेशन n into n minus 1 upon 2. नंबर ऑफ टर्म्स आर n into n minus 1 upon 2. आप निकाल भी सकते हैं. इस ब्रैकेट में कितने टर्म्स हैं, n minus 1. इस ब्रैकेट में कितने टर्म्स हैं, n minus 1. इस ब्रैकेट में अब कितने टर्म्स हो गए, n minus 2. इस ब्रैकेट में कितने टर्म्स हो गए, n minus 3. इससे अगले में कितने होंगे, n minus 4. उससे अगले में n minus 5 and the last it is 1. If you find the total number of terms, it will be n into n minus 1 upon 2. अब आप इसको लिख कैसे सकते हैं, it can be written in this way. I is greater than and equal to 1, less than j and less than n. It is ai h. If we take I is equal to 1, then the possible value of j is 2 to n. So a1, a2, a1, a3, a1, a4, a1, a5 up to a1, an. If I take I is equal to 2, then the possible values of j are 3 to n. So with respect to I is equal to 2, there will be a2, a3, a2, a4, a2, a5 up to a2, an. If I take I is equal to 3, then j vary from 4 to n. So a3, a4, a3, a5, a3, a6 up to a3, an. So this is the expression for sum of the product of numbers taken two at a time. अब इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो वैल्यू निकालने का कॉन्सेप्ट देखें. अगर हमें AB प्लस BC प्लस CA को कैलकुलेट करना हो तो वी कैन राइट A प्लस B प्लस C होल स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर होल अपॉन. अगर हमें निकालना है AB प्लस BC प्लस CA, इट इज A प्लस B प्लस C होल स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर होल अपॉन 2.
यानी sum of the number whole square minus sum of the square of the number whole upon. इसी तरह से इसकी वैल्यू हम इस तरह से निकाल सकते हैं. This is equal to a1 plus a2 plus a3 up to an whole square minus a1 square plus a2 square plus a3 square up to an square whole upon 2. In this way we can find the value of this. And sum of the product of numbers taken two at a time is equal to sum of the number whole square minus sum of the square of the number whole upon 2. For example, find the sum of the product of 1, 2, 3 up to 20 taken 2 at a time. Find the sum of the product of 1, 2, 3 up to 20 taken 2 at a time. It is equal to 1 plus 2 plus 3 up to 20 whole square minus 1 square plus 2 square plus 3 square up to 20 square whole upon 2. This is the very important concept, and it is very useful in binomial theorem and other sequences. So always remember it. So that's enough for some special sequence. In the next lecture we will start the new chapter. So thank you for today.